dear students, welcome back in our today's mathematics class. Students, we have started our chapter number 7 and we have completed exercise 7.1 and today we are going to start exercise 7.2. And again the exercise questions are just very simple and all the introduction we have done before the chapter only, right? So now quickly start the exercise 7.2. Question number 1 we have find the cube root. In the book it is given by prime factorization method and as you know student अगर cube निकालना है there is only one method, that is prime factorization method. One more method is there, estimation method. But student, prime factorization method is very standard and general method and you just learn to do with this method only because we will do the general method. Okay, the standard method to take out the to find out the cube root, to find out the perfect cube, whatever question will be, right? So let's start. First part we have 64. So first of all we'll do the prime factorization for 64. So 64, it will go with 2. 2 3s are 6, 2 2s are 4. Again with 2, 2 1s are 2s, 2 6 are 12, 2 8s are 16, and then 2 4s are 8, then 2 2s are 4, and then 2 1s are 2. What we found? These. So what are the cube root, right? So first of cube root के लिए we'll write down the cube root for 64 is equals to cube root. क्या prime factors आए 64 के? 1 2 3 4 5 6. Right student? Now we have to find out the cube root कि इसका 64 का cube root क्या होता है? So let's take out 3 into 3 into 3. So 1 2 from it into जब हम किसी पेयर में से रूट में से एक नंबर बाहर निकालते हैं बिकॉज 3 इट मीन्स 2 का क्यूब, वो क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट, इसलिए क्या अकेला बच जाता है? ओनली 2, राइट? And again one more pair is there 2 to 2, so इसमें से 2 is there, so 2 2s are 4. So cube root for 64 is equals to 4. That's it student. So this is all about question number 1. Very simple, right? We have an exercise 7.1. Right now second part 512. So 5 1 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 5, 2 8s are 16. Like we are doing division, it is just kind of division only, but you are doing in your mind. 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4. Again with 2, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, and then 2 4s are 8, then 2 2s are 4, and 2 1s are 2. Right student? So cube root for 512 is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 times, and as you can see all are in the group of 3 9. So group of 3 में से एक 2 will come out from the cube root. 1 2 into 2 into 2. So 2 2s are 4, 4 2s are 8. So cube root for 512 would be 8. Very simple. Last we have done till here only, which is a perfect cube जो 3 की पेयर में. But here we'll take out the term also, cube root also for the given term. Right student? Very simple question. Okay. Now coming to third part. 27000. As you can see at last there is 30. It means yes, it is a perfect cube. ये perfect cube ही होगा और हर एक पेयर 3 3 में ही होगा student. So let's take 2 1s are 2, 3 6, 2 5s are 10, then again 2 2 6 are 12, 2 7s are 14, and then 2 5s are 10 0. Again with 2 2 3s are 6 6, 2 7s are 14, 2 5s are 10. Now it will go with 5, 5 6 are 30, 3,
5 7 35, 5 5 are 25, 5 1 are 5, 5 3 are 15, 5 5 are 25, 2 are 10, 3, 5 7 are 35. Now 27 will go with 3, 3 9 are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. This is the prime factorization for this. Now cube root, student, let's see, 2 into 2 into 2. So cube root for 2700 is equals to, here only in shortcut I am doing, in 3 pair में से 1 2 into 5 into this 3 pair into 3. So 5 2s are 10, 10 3s are 30. So 30, cube root for 2700 is 30. You can cross check also. Cube 30 का cube कितना आएगा student? 3 3s are 9, 9 3s are 27 and 1 2 3 zeros are there. So यही आया answer. So this is there. So this is all about first, second, third part of question number 1. Total 10 parts we have. So let's do few more questions. Okay. Now student, I am doing 2 more parts for the same question and 3 parts I am giving you homework, 6th, 7th and 8th part. These 3 parts are homework for you. Very simple question these are, students. So let's quickly start 4th part. 1 5 6 2 5. So we'll do the prime factorization for this. 1 5 6 2 5. So the last number is 5. So divisibility test, we'll go with 5 only. So 5 3s are 15, 5 1s are 5, 6, 5 2s are 10, 5 5s are 25. Again with 5, 5 6s are 30, 31, 1 carry, 12, 5 2s are 10, 2 carry, 5 5s are 25. Again with 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10 and then 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25 and 5 1s are 5. Very simple students. If you don't know तो आप ये कर सकते हो कि 3 1 2 5 को 5 से divide करके whatever question is there that you can write over there. If you can't do the prime factor, mean divide in your mind, right student? So let's start. Cube root for 1 5 6 2 5 is equals to cube root. What are the prime factors? 6, 1 2 3 4 5 and 6. Now cube root बताना है. So take 5 among this pair and then from next pair again one 5 will come. So 5 5s are 25. It means the cube root for this number is 25. Very simple. Now fifth part, 9 1 1 2 5. Again it will go with 5 only. 5 1s are 5. 4 remainder, then 4 and 1. 5 8s are 40, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 15, 16, 17, 18, 3 carry. So 5 6 are 30, 2, 20 to 5 4s are 20 and then 5 5s are 25. Again we go with 5. So 5 7s are 35, 36, 5 2s are 10 and then 5 9s are 45. Now it will 9, 9, 10, 11, then 18. It will go with 3, 3 2s are 6, 7, 3 3s are 9. Again with 3, 3 8s are 3 1s are. Then again with 3, 8 plus 1, 3 2s are 6, 3s are 21. Again with 3, 3 9s are 27. 3 3s are 9 and then 3 1s are 3. Right student, this is prime factorization. Now cube root. So cube root for 9 1 1 2 5 is equals to, so directly I am taking out the pair. 5 5 5 is a 1 pair. 5 into 3 3 3 1 3 into, and from this pair 1 3. 5 3s are 15, 15 3s are 45. So it means the cube root for this term is 45. Very simple student. This is the answer. You just need to be vigilant about the calculation. ये आपकी सही होनी चाहिए. Ultimately you will get the right cube root. Right? So this is all about question number 1.
these three parts are homework for you, so you will do by your own student, right? Now coming to our question number 2. Coming to our question number 2 we have in a true false form. So जब भी हम ट्रू फॉल्स करते हैं स्टूडेंट, वी नीड टू थिंक, मतलब जो भी क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग कोई भी एक एग्जाम्पल हम सोचेंगे, अगर वो सेटिस्फाई, एक एग्जाम्पल भी सेटिस्फाई करते इट मींस इट इज ट्रू, अदरवाइज नॉट, राइट? लेट्स सी फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, नो, किसी भी ऑड नंबर, दिस इज फॉल्स। व्हाई स्टूडेंट? कोई भी ऑड नंबर ले लो, सपोज 1 का क्यूब 1 ऑड ही आया, नेक्स्ट 3 का 3 दैट इज 27 अगेन ऑड आया, नेक्स्ट 5 है, ठीक है, 5 का क्यूब स्टूडेंट 5 है 25, 25 5 जा 125 अगेन, मतलब कोई भी ऑड नंबर देखा हमने उसका आंसर जो है वो ऑड ही है, इवन नहीं, सो इट मींस इट इज फॉल्स, राइट? नेक्स्ट, अ परफेक्ट क्यूब डजंट एंड विद 20, yes true, I told you in introduction part cube means, और अगर 0 वाली है तो 3 0 होनी चाहिए या 6 0 in pair of 3, right? 2 0 है, it means it is not a cube, it is square one, right? Now C part, it's square of number end with 5, its cube end with 25, ये ट्रू है या फॉल्स? कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक नंबर है, सपोज 5 का स्क्वायर क्या है स्टूडेंट? 25 एंड विथ 5, अब इसी 5 का क्यूब लूं मैं, 5 का क्यूब 5 5 are 25, 25 5 are 125 and with 25. Okay, let's take another one more example. 5, if I'll take 15 का square is 225, right? If you don't know then you can do multiply, but I have learned till 30 square roots. Okay, 15 का is 225 और 15 का क्यूब क्या है स्टूडेंट? 3375, so it means and with 75 not with 25, तो some cases में तो it is possible, not all cases, so it means the answer is false, right student? Now coming to D part, there is no perfect cube end with 8, कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो एंड खत्म हो रहा है जो नंबर 8 से, फॉल्स। फर्स्ट नंबर ही अगर ले लूं 2 स्टूडेंट, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड विद 8, सो ऐसा कोई नंबर नहीं है। 112 भी है, 12 का क्यूब इज 1278, ये भी एंड हो रहा है 8 पे, सो ऐसा कोई नंबर है स्टूडेंट क्यूब जो एंड विद 8 है? यस मैनी आर देयर, तो इट मींस दिस इज फॉल्स, राइट? नाउ ई पार्ट, द क्यूब ऑफ 2 digit number may be a 3 digit number, false। मतलब क्या है स्टूडेंट? व्हाट आई टोल्ड, जब भी ट्रू फॉल्स हो एक एग्जांपल से उस चीज को रिलेट करो। एक 2 डिजिट का कोई भी नंबर है, सपोज 2 डिजिट का 10 क्यूब ले रही हूं मैं, 10 ही होगा, 2 डिजिट नंबर 1 to 9 तो 1 डिजिट नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट 10 ही है, सो अगर इसका क्यूब करूं तो आंसर क्या है स्टूडेंट? 1 2 3 4 डिजिट का, अगर 10 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ही 4 डिजिट है तो बाकी 11 12 ये भी सारे मोर देन 3 होंगे, ऑब्वियस, इट मींस दिस इज फॉल्स, नॉट 3 डिजिट नंबर, मोर देन 3 डिजिट नंबर इट इज, राइट स्टूडेंट? नाउ कमिंग टू एफ पार्ट, द क्यूब ऑफ 2 digit number may have 7 or more digit। अब क्या बोला है? क्यूब ऑफ 2 digit number। अब हम सबका तो देखेंगे नहीं, 12 के लिए, 13 के लिए, 14 के लिए, इट मे बी यस, बट स्टूडेंट अब देखो 2 डिजिट, हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है? 99 का क्यूब इज 970299, हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99, अगर इसका हम क्यूब कर देना आंसर इज 1 2 3 4 5 6, हाईएस्ट डिजिट इज 6, नॉट 7 और मोर। अब 3 डिजिट का करेंगे तो हो सकते हैं 7 डिजिट या उससे ज्यादा, बट क्वेश्चन में क्या है? क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, हाईएस्ट में ही अगर 6 डिजिट आ रहे हैं तो अब ऐसे 98 में भी 6 होंगे या 97 में 5 हो सकते हैं, इन सच अ मैनर, है ना? क्योंकि
क्योंकि 99 के बाद 1000 तो 3 डिजिट का नंबर बन जाता है। अगर हाईएस्ट 99 में आ 6 डिजिट तो इट मीन्स दिस आंसर इज false. Right, student? Now the last part, the cube of a single digit number may be a single digit. मतलब एक सिंगल डिजिट का जो भी नंबर होगा उसका क्यूब 3 डिजिट सिंगल डिजिट का हो सकता है स्टूडेंट। यस, हाउ? 2 ले लो, 2 to the power 4 to the 8, राइट। 1 ले लो, 1 का क्यूब इज 1 ओनली। तो इसमें लिखा है कि एक सिंगल डिजिट का क्यूब क्या सिंगल डिजिट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। So this is true. Got student? So this is all about question number 2. Now coming to our question number 3. Now coming to our question number 3, you are told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization that what is the cube root for this number? And similarly guess the cube root for these number as well. स्टूडेंट, अगर परफेक्ट क्यूब है इसका क्यूब रूट क्या होगा? ऑब्वियसली वी विल सी विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। यही करते थे अभी तक, बट हियर इज बीइंग टोल्ड इन द इक्वेशन दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन, यू जस्ट नीड टू गेस और सम अदर मेथड। तो बेटा there is one tricky method, there is very shortcut way. This is also one of the simplest method rather than the prime factorization. What is that method? Just understand it carefully. For this, first of all, you need to learn the cube for 10, 1 to 10, right? So I have already written over here 1 का cube, 2 का cube is 8, 3 का cube is 27, 4 का cube 64, in such a manner till 10 का cube is 1000. And after that, you just see the last number, last digit. 1 का last 1, 2 का last 8, 3 का last number 27. So I have underlined all the last digit or number for the cube, particular cube. ठीक है? Because यही हमें सिर्फ check करना है in the equation. How? Let's see. So first of all, we start with 1331. ध्यान से देखो बेटा, इसका लास्ट नंबर क्या है? 1. 1 here is 1, किसका क्यूब है? 1 का ओनली, so it means your cube root का लास्ट नंबर is only 1. अब फ्रंट का नंबर क्या होगा? Let's see. Second step, you need to hide the last 3 numbers. हमेशा 3 नंबर 1 2 3 3 नंबर हाइड किए, क्या बचा? 1. अब ये जो 1 है आपको ये देखना है किस क्यूब रूट के सबसे नजदीक है। देखिए 1 का क्यूब 1 एंड 2 का क्यूब 8, तो किसके नजदीक है सर? ऑब्वियस है 1 के, एंड 1 किसका क्यूब है? 1 का ओनली, इट मींस देयर इज 1 ओनली, सो इट मींस 1331 का क्यूब रूट इज 11. I know you are not understanding, there is a little bit confusion. Let's take another example. 4913. 4913. Last number is 3. किसका है स्टूडेंट? 7 का क्यूब. So the last number would be 7. A front number. Next second step, hide 3. Last number 1 2 3. Hide किया. क्या बचा स्टूडेंट? 4. So 4 जो एक नंबर है वो किसके क्यूब के नंबर के सबसे नजदीक है? 1 डिजिट का है तो या फिर 1 और 8. Which one is the nearer term? Obvious है 1, and 1 किसका क्यूब में आता है? 1 के क्यूब में, so it means there would be 1. So cube root for 4913 is 17. Very simple. Let's take another example. 1216 7. Last number is 7. Just see 7. 3 का क्यूब, so it means 3. लेना आपको ये क्यूब वाले ही टर्म्स है, क्यों? क्योंकि क्यूब रूट निकालना है ना स्टूडेंट, नंबर हम यहाँ से चेक करेंगे, राइट? सो 3 वुड बी द लास्ट नंबर फॉर दिस क्यूब रूट. नाउ नेक्स्ट स्टेप, हाइड लास्ट 3 नंबर, क्या बचा? 12. अब ये जो 12 नंबर है इट इज 2 डिजिट, किस नंबर के ज्यादा नजदीक है? 8 और एक है 27. ऑब्वियस है किसके नजदीक है? 8 के, सो 8 किसका क्यूब है स्टूडेंट? 2 का, so here would be 2. It means the cube root for this number is 23. Very simple और मजा भी है, it's very tricky also. The last is 3 2 7 6 8. Now
last number is 8. To find height last 3 number क्या बचा 32. Now 32 किसके नजदीक है 27 और 64 क्योंकि 2 डिजिट का ऑब्वियस है 2 डिजिट के देखेंगे 27 और 64 ऑब्वियस है 27 के that is 3 value. That's it, simple, very simple student. Cube root for this number is 32. I hope you got this topic. This is very tricky and very easy also, no? So this is all about our question number 3, and about after this question we have done with our exercise 7.2, and we have completed our chapter 7. After completion of this chapter we will be taking the test, so prepare it well student. Although this chapter is very simple, right? So do your work very nicely, understand it carefully. It's very simple question. Without factorization भी हम निकाल सकते हैं. You can check also student. 32 into 32 into 32. This answer you will get only. So this is little bit tricky question. Without the factorization, take out the cube root. So do your work on time. Do your work very nicely. Prepare it well for the test. So till then, thank you so much student for watching. Bye bye.